यस सर। ओके फाइन। तेजस हम वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एंड कल आई थिंक और एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन डाला था कि लाइक यू हैव टू ट्रांसफर अ ब्लॉक ऑफ मैसेज फ्रॉम वन ब्लॉक टू अनदर ब्लॉक। ओके, आज वो हम क्वेश्चन देखते हैं, लाइक उसके रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस देखते हैं। एंड देन तेजस हम आपका वो बाद में करेंगे, ठीक है। सर एक बार इवन ऑड वाला भी सिखा दीजिए। अच्छा, एक बार इवन और हमें लाइक रिवाइज करना है, ठीक है। हम इवन और एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। चलो यस स्टार्ट करते हैं। इसका पूरा स्क्रीन विजिबल है ना? यस। ओके यस। फाइन, यहाँ देखिए। तो देखिए, हमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इवन और ऑड का कंसेप्ट पता है। सी, इवन एंड ऑड नंबर। देखो इवन ऑड का कंसेप्ट क्या है। जैसे कि मान लो अगर मैं कोई भी इवन नंबर लो, एनी इवन नंबर, लेट इट टू बी 87, ठीक है। तो हम 87 को कैसा लिखेंगे? लेट 8 क्या होगा हमारा 1000 एंड 7 क्या होगा हमारा 011। सो दिस इज ऑड नंबर ना, दिस इज ऑड नंबर। लेट्स टेक वन मोर ऑड नंबर, लेट इट टू बी 37 और लेट इट टू बी 33। तो ये क्या होगा 0011, ये क्या होगा 0011, ठीक है। सो हम एक बात क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो लास्ट नंबर है ना ऑड नंबर में, ये जो लास्ट बिट है, ये जो लास्ट बिट है ना ऑड नंबर में, वो हमेशा 1 रहेगा। सो पॉइंट टू नोट, पॉइंट क्या है इधर हमारा कि एलएसबी, हम इसे एलएसबी कहते हैं। हम क्या कहते हैं इसे? एलएसबी। इसे हम कहते हैं एमएसबी। एलएसबी मीन्स व्हाट? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। एलएसबी मीन्स व्हाट? लीस्ट significant bit, and MSB means what? Most significant bit. Most significant bit, ठीक है। तो ये LSB और ये MSB। तो पॉइंट क्या नोट करना है? LSB, if LSB is 1, then the number is odd, then the number is odd, ठीक है। ये हमारा पॉइंट यहाँ से क्लियर हुआ। Now let's consider any even number। अगर कोई भी हम even number लेते हैं, let it to be 46, चलो 46 ले लेते हैं। तो 4 पे code is what? 000 and this is what? 0110। Let's take another number, let it to be चलो 58 ले लेते हैं। तो 5 क्या है? 0101 and 8 क्या है? 1000। तो इसमें हमने एक बात क्या नोट किया? सो इसमें हमने एक बात ये नोट किया कि इवन नंबर का हमेशा लास्ट बिट क्या रहेगा? 0 रहेगा। हमेशा लास्ट बिट क्या रहेगा? हमेशा लास्ट बिट 0 रहेगा। सो इफ LSB इक्वल टू 0, देन द नंबर इज इवन, देन द नंबर इज इवन, ठीक है। हमारा यहाँ से इतना कंसेप्ट क्लियर, सबको इतना समझा एटलीस्ट? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस। ओके, अभी हम थोड़ा आगे आई थिंक सो विराज ने भी एक क्वेश्चन किया है। अ ब्लॉक ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन फ्रॉम, ओके। विराज, हम ये क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। जस्ट मुझे एक बार रिमाइंड करना, लाइक इससे रिलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल ना, जो ब्लॉक ऑफ डेटा ट्रांसफर क्वेश्चन है ना, हम पहले वो करते, विच वन इजी, एंड देन वी विल डू दिस क्वेश्चन। ओके, आफ्टर आई थिंक सो वी विल डू इट I think so this will be the third code which we will do today, okay? Just remind me at least once. Yes sir. ओके, तो देख हमारा लॉजिक क्या, अगर लास्ट बिट 1 है तो LSB, सॉरी ऑड, 0 है तो MSB, ठीक है। नाउ हम क्या करते हैं, देखिए। नाउ से वी हैव लर्न RRC। So this is the instruction, this is the instruction RRC and RLC। देखिए RRC में होता क्या है एग्जैक्टली, RRC में होता क्या है देखिए। देखिए मान लो ये कैरी है, ये क्या है? कैरी, और ये मेरे बिट्स है, ठीक है। अज्यूम कीजिए यहाँ पर 1 है, अज्यूम कीजिए, एंड यहाँ पर सब कोई भी नंबर है। देखिए ये नंबर क्या है? ये नंबर क्या है? दिस इज व्हाट? 5 एंड दिस इज 4, दिस इज 54, हाँ, ठीक है। देखिए ये 54 है। अभी देखिए जब मैं इसको ना रोटेट करता हूँ एक बार, व्हेन आई डू रोटेशन वन टाइम, ओके, व्हेन एज आई एम रोटेटिंग राइट ना, तो टुवर्ड्स राइट, RRC मींस व्हाट? टुवर्ड्स राइट, मींस व्हाट? इन दिस वे। तो देखिए ये इधर आएगा, दिस विल कम हियर,
this will come here, this will come here, this will come here. एंड देखिए जो ये बिट है ना, वो इधर आएगा और इधर आएगा, ठीक है। तो जब भी मेरा इवन नंबर, देखिए अभी देखिए मेरा नंबर 54 था, और जब उसको मैं एक बार रोटेट करूंगा आफ्टर परफॉर्मिंग आरआरसी, आफ्टर परफॉर्मिंग आरआरसी, जब मैं आरआरसी परफॉर्म करूंगा तो डेफिनेटली मेरा कैरी क्या हो जाएगा, 0 रहेगा। दिस विल बिकम 0। देखिए ये बिट यहाँ आ जाएगा ना, एंड रिमेनिंग सब बिट शिफ्ट होंगे, वो आप कर लोगे इजीली। दिस इज 1, ओके। तो देखिए मैंने क्या डिराइव किया कि अगर इवन नंबर रहेगा ना, तो देखो पॉइंट टू नोट क्या है, देखिए अगर इवन नंबर है, दिस विल बी दिस दिस एलएसबी ना, दिस ऑलवेज बी 0। अगर इवन नंबर रहेगा तो देखिए हमने यहाँ देखा ना, इफ इवन नंबर देन दिस लास्ट बिट इज ऑलवेज 0। इफ लास्ट बिट इज 0 तो ये बिट हमेशा 0 रहेगा। और ये बिट जब हम आरआरसी करेंगे, देखो हम जब हमने आरआरसी किया तो ये बिट कहाँ पर आ जाएगा, कैरी में। तो कैरी क्या हो जाएगा, 0। कैरी क्या हो जाएगा, 0। तो हम क्या करते, तो सी व्हाट लॉजिक वी हैव रिटन, आवर लॉजिक इज व्हाट, आवर लॉजिक इज आफ्टर परफॉर्मिंग आरआरसी, आफ्टर परफॉर्मिंग आरआरसी, इफ कैरी फ्लैग में 0 है, इफ कैरी फ्लैग में 0 है, देन that number is what, even number ना, then that number is even number। आप कोई भी इवन नंबर ले लीजिए, आप कोई भी इवन नंबर ले लीजिए, उसको एक बार रोटेट कीजिए तो देखिए आपका कैरी फ्लैग में हमेशा 0 आ जाएगा। तो हमने तो वही लॉजिक लिखा था ना, इफ कैरी फ्लैग बिकम 0 then that number is always a even number। now what about odd number, देखिए odd number में भी सेम चीज। odd number में क्या होगा, आप कोई भी odd number ले लीजिए। see if we considered any odd number, ठीक है, if we considered any odd number, अच्छा before going to odd number, let's see one more instruction। this is all about RRC। now देखिए RRC और RAC में डिफरेंस क्या है, यहाँ हम पॉइंट लिख लेते, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन RRC एंड RLC, ओके। देखिए नाउ वी आर लर्निंग, जस्ट ये पॉइंट है, ये याद रखिए बस। देखिए only difference is what between RAR and RRC, ये यहाँ देखिए, ठीक है। देखिए ये जो बिट है ना, ये बिट इधर आएगा और दिस बिट विल कम हियर, ओके। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन RAR एंड RRC। now see here, now let's learn about RLC। देखो RLC, sorry not RLC, now about odd number। ये ऑड नंबर में क्या होगा, आप कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए, let to be, let consider 57 only, okay। 0 1 0 1, let it to be 1, okay। वही देखिए जब मैं RRC करूंगा, when I do RRC, so this will bit shift here, shift here, shift here, shift here, and this will come here and this will come here, assume it to be 0। देखिए जब भी हमारा ऑड नंबर रहेगा ना, तो हमेशा हमारा कैरी क्या हो जाएगा, 1, बिकॉज इन केस ऑफ ऑड नंबर द LSB विल ऑलवेज बी व्हाट, ये हमेशा 1 रहेगा। कभी जब नंबर ऑड रहेगा, तो जब ये 1 है और जब हम RRC करेंगे तो डेफिनेटली दिस नंबर विल कम हियर ना, तो हमारा हमेशा कैरी सेट होगा। तो हमने क्या लॉजिक लिखा था, इफ कैरी सेट, इफ कैरी इक्वल टू 1, then that number is always an odd number, it's always an
ऑड नंबर। सबको समझा इतना कंसेप्ट? yes, ओके, नाउ देखिए हमें हमें जस्ट देखिए सेम लॉजिक हमें जस्ट कोड में इंप्लीमेंट करना है। क्या करना है? कोड में इंप्लीमेंट। ये कोड उस क्वेश्चन क्या था? आई थिंक सो क्वेश्चन कुछ इस तरह था। ये क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला था कि दे हैव गिवन अ ब्लॉक ऑफ डेटा, दे हैव गिवन अ ब्लॉक ऑफ डेटा। Okay, starting from C0, just a second. Sorry. Okay, starting from C030 to C. Now, assume let's take our own question. ओके, so देखिए एग्जाम में भी ना उन्होंने ऐसा दिया रहेगा इन क्वेश्चन में कि a block of data is stored from starting memory location C030 to C038. ठीक है, यहाँ पर डेटा स्टोर्ड है। नाउ लेट्स कंसीडर एनी रैंडम डेटा। लेट्स 48, 34, 23, 31, 72, 68, 69, 47, 98, 9 एंड 10। ओके, देखिए तो नंबर ऑफ डेटा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो टोटल नंबर कितना अपना? 11। ओके, 11। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे ना फॉर लूप में समझते हैं। सॉरी, इन सी प्रोग्रामिंग, इन सी प्रोग्रामिंग। देखिए हम इसको सी प्रोग्रामिंग कैसा लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 11 डेटा है ना, तो वी हैव टू सी ऑल दिस डेटा। सो हम क्या करते हैं? हम एन में क्या ले लेंगे? 11। हम एन में क्या ले लेंगे? 11। फिर हम क्या लिखेंगे? फॉर आई इक्वल टू 1, I less than equal to n, or else we can write in this way also now. Just wait. I equal to 11, I greater than 1, I minus minus I greater than equal to 1, I minus minus। हम क्या करेंगे फिर? रोटेट RRC करिए। ठीक है, हाँ अब क्या करेंगे? अपन कंडीशन चेक करेंगे ना, if carry is equal to 0 then even number। हम क्या करेंगे? if carry is equal to 0 then even number and we will increment। हम क्या करेंगे? d को क्या कर देंगे? d plus 1। assume हम d is for even number and e is for odd number। now let's go with the wording only, just a second। e is for even number and d is for odd number। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर? e equal to e plus 1। okay, so this is our for, this is our else में क्या लिखेंगे अपन? अगर नंबर इवन नहीं है डेफिनेटली इट विल बी ऑड ओनली ना, तो d plus 1 and let's close the code। सबको समझा सी प्रोग्रामिंग में कोड? जस्ट यू हैव टू राइट सेम कोड इन दी 8085। नाउ सी हम 8085 में कैसा लिखेंगे? हम सी हियर first of all see this 11 now, so what we are doing, we are moving this 11 into 11। see we don't write 11, see in our language since we are using the hex code na, so instead of 11 what we will write b। so instead of 11 we will write b, because see a is 10 and b is 11। this is hexadecimal representation na। okay, now say we have to point here, we have to point at me, sorry, see now we have to make e equal to 0 and d equal to 0। so what we have done? we have done mvi d equal to 0, mvi
e equal to 0. So this is for odd number and this is for even number. ठीक है. Now हम क्या करेंगे? Now we have to point here. Now we have to point here. अच्छा, before pointing here, let's learn one more point here. Let's learn one more point here. Okay. देखिए यहाँ point to be note क्या है? See here point to be note is what? अच्छा, just a second. देखिए यहाँ point to be note is what? मैं कहाँ लिखूँ ये? स्पेस नहीं है. हाँ चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ. ठीक है. See point. See to perform RRC, RLC, anything, or RAR or RAL, anything, the number must be in accumulator. The number must be in where? The number must be in accumulator. Okay. नंबर कहाँ देना चाहिए? Accumulator में. तभी ही हम या RRC, RLC, anything you can perform. Okay. देखिए. Okay, fine. तो देखिए हमारा नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो फर्स्ट वी हैव टू पॉइंट हियर. सो वी आर पॉइंटिंग हियर. ओके, वी आर पॉइंटिंग हियर. सो व्हाट वी आर राइटिंग? LXI H C030. नाउ see we have to perform RRC. See we are pointed here. Now we have to perform RRC. Before performing RRC, what we have to do? We have to move this number into accumulator. We have moved this number. Now perform RRC. See once we perform RRC, the carry flag. Now we have to check the carry flag. See what we have done here. We are checking the carry flag now. So what we are writing is what? Jump carry. Jump carry. See, jump carry means what? If carry is generated, then jump. Or else, if carry is not generated, which means what? C is 0. C is 0 means what? Your number is even. Your number is even means what? We have to increment what? We have to increment E. See, jump carry. Jump carry. Jump carry means what? We have to jump when carry is generated. We have to jump here. But if carry is not generated, then that number is what? Increment ना. देखिए if and else में या तो ये एग्जीक्यूट होगा या तो ये एग्जीक्यूट होगा ना, दोनों तो नहीं होंगे. वैसे हमारे केस में जंप कैरी होगा तो हम यहाँ जंप करेंगे. हम ये चीज हम परफॉर्म नहीं करेंगे ना. So jump carry increment D, then we are making an unconditional jump at L2. ठीक है. अच्छा देखिए अगर ऑड नंबर है तो then we have to increment what? D. Then we have to increment D. Okay, we have to increment D. Then we want second number. What we want? Second number na. So just you have to write increment H. When you write increment H, now we will point here. You have to write decrement C. Why decrement C? देखिए हमने एक नंबर को देखिए हम यहाँ हम करते हैं ना I equal to minus minus. तो सेम हियर we have to perform I equal to minus minus only ना. तो हमारा C में B था, हमारा C में 11 था. now C में क्या आ जाएगा? 10. decrement C. now we have to check ना, हम चेक करते हैं ना कि I बड़ा है कि नहीं 1 से, या और you can make it 0 also. You can make it 0 also. So what do you check? Jump not 0. अगर 0 नहीं है, where we have to jump here. देखिए हमने इंक्रीमेंट किया. Now again once we have done increment, now this pointing here. Okay, now again we have to move this number into accumulator. Move this number into accumulator. Now accumulator में क्या आ जाएगा? 34 आ जाएगा. Now again we have to perform all this thing. now यहाँ देखिए once you increment E, now we have to see. देखिए जैसे कि मान लो अभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो आप ये तो एग्जीक्यूट नहीं करते हो ना, आप डायरेक्टली कहाँ आते हो? आप डायरेक्टली बाहर आते हो ना. सेम अगर इंक्रीमेंट डी सेट, अब जैसे कि मान लीजिए हमारा कैरी जनरेट नहीं हुआ, तो वी विल इंक्रीमेंट डी, देन वी आर जस्ट टू कम आउट ऑफ द इफ एंड एल्स जंप टू, वी विल डायरेक्टली कम हियर. तो हम ये चीज एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, समझ रहे हो? जंप पॉजिटिव L2 दैट हियर. सी इंक्रीमेंट डी हम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो आइदर इंक्रीमेंट डी एग्जीक्यूट होगा नहीं तो इंक्रीमेंट डी एग्जीक्यूट होगा, लेकिन दोनों नहीं हो रहा है ना. तो डिक्रीमेंट से जंप नॉट 0, वी हैव जंप हियर. ओके, नाउ व्हेन दिस बिकम फॉल, व्हेन योर C बिकम 0, जब C 0 हो जाएगा, हम सभी नंबर को एक बार एग्जीक्यूट ट्रैवर्स कर लिए रहेंगे. ठीक है. नाउ जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट इंक्रीमेंट योर पोजीशन. नाउ देन यू विल पॉइंट हियर, just move
m comma e, increment your position and just move m comma d. So आपका यहाँ पर इवन काउंट स्टोर होगा या यहाँ पर ऑड काउंट स्टोर होगा? आपको समझा अभी या कुछ डाउट है अभी भी? लेट मी नो। Yes, sir, समझा. सभी को समझा? क्लियर हुआ? अच्छा, ओके। किंजल का एक क्वेश्चन है, सर इन आवर कॉलेज ANI इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड इन फाइंडिंग इवन एंड ऑड, कैन यू एक्सप्लेन वंस? ओके, देखिए लॉजिक से मैं किंजल मैं आपको जो लॉजिक है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? यहाँ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल किंजल ANI का फुल फॉर्म क्या आपको पता है? हमने क्या था ना, आपको याद है? यस। देखिए ANI का फुल फॉर्म क्या है? लॉजिकली एंड इमीडिएट, और यू कैन से इमीडिएट, लॉजिकली एंड इमीडिएट। देखिए लॉजिक क्या है इसमें, अज्यूम कीजिए, चलो हम दो केस ले लेते हैं, ठीक है? लेट्स ANI, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ नंबर, लेट्स टेक a इक्वल टू, चलो कोई भी हम इवन नंबर ले लेते हैं, ठीक है? लेट्स इवन नंबर इट टू बी 48 एंड हम यहाँ पर कोई ऑड नंबर ले लेते हैं, लेट्स इट टू बी 37, ओके? जब हम इवन नंबर का कोड लिखेंगे तो दिस इज व्हाट 0 1 0 0 एंड ऑफ 8 दिस इज 0 0 0 एंड 37 का कोड क्या है? 0 0 1 1 एंड 7 का कोड है 0 1 1 1, ठीक है? अच्छा, अभी देखिए ANA में क्या होता है, हम लॉजिकली एंड करते हैं, क्या करते हैं? एंड करते हैं। यहाँ देखिए, नाउ if I write an instruction ANI, अगर मैं लिखता हूँ ANI 01, if I write ANI 01, इसका मतलब क्या? यहाँ देखिए, इसका मतलब you have to logically and 48 with 01, 48 with 01. So 48 we have this, and you have to perform ANI 01. So this is 48 now. So copy it, and 01 क्या होगा? 0 0 0 0, देखिए 0 का 01 means what? 0 0 0 and 1 means what? Okay. And now when we perform logical AND, okay, you have to perform logical AND. See, 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Okay. Now 37. अच्छा देखिए 37 ना, तो अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक हियर आल्सो यू हैव टू परफॉर्म ANI 01. तो हम जब 37 लिखेंगे तो 37 वी हैव 0 0 1 1 and 0 1 ना, तो मैंने परफॉर्म लॉजिकल एंड इंस्ट्रक्शन। देखिए सब कुछ समझा आपको? देखिए लॉजिक क्या है ना, लॉजिक इज व्हाट, अगर आपका इवन नंबर रहेगा ना, सी इफ योर नंबर इज इवन, okay, if your number is even and if you perform ANI 01 and if you perform ANI 01, then and if you get, if your number is even, sorry, let's consider any number, and if you perform ANI 01 and if you get answer as 0, then that number is even, See here, we've taken 48 and we perform 01. What we are getting? 0. So that number is what? Even. Now see here, if you get answer, if you perform ANI with any number, and if you get answer as not 0, if we get answer as not 0, then that number is what? Then that number is odd. यहाँ देखिए, हमने A में 37 लिया, हमने लॉजिकली एंड किया 01 से, तो हमें देखिए जो आंसर आ रहा है वो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा, हमेशा हमें 1 आएगा आंसर, which is non-zero ना, which is non-zero. Okay, so when you perform ANI 01 and if you get non-zero answer, then the number is odd. If you perform ANI 01 with a number and if you at final output you get answer 0, then that number is even. आपको समझा अभी? यस सर। अच्छा देखिए इसका हम कोड कैसा लिखेंगे?
देखो बहुत सेम कोड है, एग्जैक्टली सेम कोड। चलो एक बार देख लेते हैं, सिंस वी आर डूइंग, लेट्स डू इट प्रॉपर्ली। देखिए कोड सेम है। See again, they will give a block of data. Okay, so the code is same. See at C we are moving. Let's consider. अच्छा यहाँ देखिए, अच्छा Tejas not. Viraj I think so. Viraj is same logic now we will use in that nibble question when we have to subtract the nibbles and then we have to add up. The same question, the same logic we will use. Okay, तो ये logic Yes. हम same उसमें भी use करने वाले हैं। अच्छा देखिए सेम, जैसे कि हमने अभी MVI-C में क्या ले लेंगे हम 11, बट इन आवर लैंग्वेज इट विल बी 12 बिकॉज ए क्या होता है 10 एंड बी होता है 11, ठीक है। और सेम MVI-C इक्वल टू सॉरी D इक्वल टू 0 0 एंड MVI-E इक्वल टू 0 0। ओके, नाउ we have to do, we have to LXI H C0 30, ये याद रखिए, डायग्राम याद रखिए, डायग्राम याद रखिए, ठीक है। Alex had C030, then we have to move into accumulator. Why we are moving? Because see now here also, what we are doing logically and accumulator with 0 1 na? So our number must be in accumulator. Definitely a number must be in accumulator. So we have move our number in accumulator. Okay. Now what we are doing, ANI 0 1. What we are doing, ANI 0 1. Now in this case what we are writing, jump 0. Okay, see always try to remember one thing, don't mug up the code. See maybe in your book, अभी देखिए आपके बुक में मुझे पता नहीं कि मैम ने जंप नॉट 0 लिया है कि जंप 0 लिया है, बट कुछ भी लेने दीजिए, लेकिन इफ योर लॉजिक इज राइट ना देन यू डेफिनेटली विल गेट द आंसर। ओके देखिए हमने क्या लिखा इधर, जंप 0, देन लेट्स वी विल जंप समवेयर। ओके, अगर मान लीजिए देखिए ये, मान लीजिए कंडीशन फॉल हो गया, ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जंप 0 मतलब मान लीजिए आंसर हमारा 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर क्या है मेरा, ऑड नंबर। नंबर क्या है मेरा, ऑड ना, राइट ना। देखिए यहाँ देखिए, देखिए अगर नंबर मेरा 0 नहीं है, दैट मींस दैट नंबर इज व्हाट, ऑड ना। सेम व्हाट आई हैव रिटन, जंप 0, I will jump when it's a 0, means I will jump when number is even, when number is even। मान लीजिए कंडीशन फॉल्स हुआ, दिस कंडीशन इज फॉल्स, जंप 0 कंडीशन इज फॉल्स, दिस मींस व्हाट, this means what, answer is not 0, so I will come here and I will increment D, because if answer is not 0 then the number is surely an odd number, and for D is odd now, and for E we have considered even। Okay, now assume if answer is, if we jump 0, if we get a 0, then the number is definitely an even number, so we have to increment A, and here we have to make an unconditional jump to L2, and this is L2, same, you have to increment your position, decrement your C, jump not 0, you have to jump here, where, here. See the entire logic is same, just the only thing vary is this much part. Okay, so instead of writing RRC jump carry, what they have written is what, ANI 0 1 jump 0। I hope this is clear to you, Kinjal। Yes, sir. Okay, आप कुछ डाउट है आपको इसमें और, like anything more, or should we move ahead? No doubt, sir. Thank you. Okay, I can hear, sure। ठीक है, now let's अच्छा देखिए अभी एग्जाम में, अच्छा देखिए अभी एग्जाम में और टाइप क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक दे विल गिव यू okay fine, see they will give you, like you have to transfer a block of data from the one location to the another location। Okay, see the question will be like from this type, properly, and then I will let you know।
अच्छा, किसी को एग्जाम में लाइक इन प्रैक्टिकल दे हैव लाइक सॉर्ट द डेटा और फाइंडिंग द लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ये आपको है? Yes. हाँ, Hey. है आपको? Uh, सॉर्टिंग ऑफ yes. डेटा है आपको? Yes, sir. अच्छा, प्रैक्टिकल में है, मतलब प्रैक्टिकल में आने वाला है, क्योंकि देखो एग्जाम में नहीं आएगा, फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा। लाइक फाइनल मतलब फाइनल एग्जाम में इतना बड़ा कोड लिखने नहीं आता है। फाइनल एग्जाम में मैक्स टू मैक्स दे विल आस्क यू अबाउट multiplication, division, even odd number concept. The largest, smallest they will ask, but all about sorting with they will never ask. Sorting they will never ask. Okay, we will see it, but in exam it's not so important. Okay. अच्छा, you have the, अच्छा आपको ये कोड है like to add the block of data, you have to add the blocks of data. So fine, I think so ये किसी को नहीं है। One more question is what, so in exam you will might get come to find the first occurrence, the first occurrence of a specific data. देखिए कोड में, क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फर्स्ट occurrence of a specific data and let that data be, let that data be AB. Okay, see AB is your data, AB is your data. ओके, तो डेटा भी AB। देखिए क्वेश्चन क्या है जी, एक काम करता हूँ मैं, जस्ट पूरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। सी व्हाट अ क्वेश्चन इज राइट, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फर्स्ट occurrence of AB data, the length of the block is stored at C07F, the data stored from memory location C080, store the address of this occurrence in HL pair. If data is not found, then store FFFF in HL pair. I hope question is clear to everyone. First of all, the question क्या कह रहा है, write a program to find the first occurrence of a AB data. The length of block is stored at the length of block is stored at the location. The length of block is stored at the location C0FF, sorry C07F. The data stored from memory location C080. Store the address of this occurrence in HL pair. If data is not found, then store FFF in HL pair. Okay. I hope this is clear to everyone. First of all, देखिए now हम डायग्राम ड्रा करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। So always try to draw a diagram. It will be easy for you to understand. See, यहाँ पर ना length of block stored है. We are assuming कि let it to be 6. Okay.
So here there will be a 6 number. You will store 6 number, any random 6 number you have to store. Let that number be 10, 20, 30, 40, AB, and let it be 50. So see 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 number are there. A block length is also 6. Okay, this is our what block length. Because they have mentioned in the question now, your block length is been stored at the location C07F. Okay, now see here. Now first of all, we will understand this code in C language. This is code in C programming. अच्छा, आप सभी को C आता है ना? Let me know, guys. आप सभी को C आता है? Then I will write in C programming. Yes. Yeah, I hope everyone knows C language. C programming. Okay, हम C programming देखते हैं first of all. Then we will see here. Okay, basic आता है. Okay, fine. यहाँ देखिए, तो C programming में हम कैसा लिखते हैं? अच्छा पहला हम ये समझ लेते हैं. देखिए, so we have what data ना with us. So let's that data we have taken a variable. चलो हम like first we will write in C programming. Then we will try to understand. देखिए हमने वो डेटा एक वेरिएबल लिया और डेटा में हमने क्या स्टोर किया AB, क्योंकि हमने हमें क्वेश्चन में मेंशन किया है ना कि द डेटा मस्ट बी AB. नाउ व्हाट वी विल डू, now we will just compare. Acha, now that now see here, we have to take this length of a block length from user only na. Let's say n be a block length. n क्या हमारा block length है जो 6 है. in this case, okay, in this case तो हम क्या करेंगे, I is equal to 6, I greater than 0, I minus. Okay, now we will write code here. Okay, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम ऐसा लिखेंगे, if a of, or else you can ऐसा लिखो, just a second, I equal to 1, I less than equal to 6, I plus. And ये हम क्या करेंगे, if a of I is equal to data, if a of I is equal to data, then हम क्या कर रहे हैं, what we are doing, store the location and return और exit. मतलब अगर हमें डेटा मिल गया ना तो हम लोकेशन स्टोर करके डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे. सी मीन्स व्हाट, जैसे कि मान लीजिए हमने ये एरे लिया, जब यहाँ पर 10 है, यहाँ पर AB है. देखिए तो we are pointing here, so this is I, this is 1, 2, 3, 4, 5. okay, so first time loop will run. So अपना I1 है ना, so A of this is only, this is A, so A of 1 is what, 10. 10 is equal to AB is what, नहीं ना, तो this if condition is false, therefore हम अंदर नहीं आएंगे, हम वापस यहाँ पर आ जाएंगे. Now I plus plus, now we will point here, now see, A of 2 is what, AB. A of 2 is what, AB now. Now see, our data is also AB. So AB is equal to AB now. Yes, bhai. So we will store this location and we will exit. Exit means what? हम इसकी सब आगे या चेक करेंगे ही नहीं, हम डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन में क्या बोला उसने, दी फर्स्ट ऑकरेंस, आपको मिला तो डायरेक्ट बाहर आ जाओ. इफ यू गेट दैट नंबर देन डायरेक्टली आप हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली बाहर आ जाना है. ठीक है, सो दिस इज द लॉजिक. Okay, now we have to write this same logic in our code. Okay, now देखिए, there may be a scenario. Okay, there will be a scenario अगर जैसे कि हमें डेटा ही नहीं मिलेगा, now which means what, see, this might be also case ना, जैसे कि हमने 5 नंबर लिया है और पांचों नंबर में लाइक AB किधर है ही नहीं. सो इसमें क्या होगा, जब हम चेक करेंगे, हम यहाँ पहुंच जाएंगे, खत्म हो गया ना ब्लॉक ऑफ डेटा,
और हमें ए भी मिला नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न क्या करेंगे, हम स्टोर क्या करेंगे, लोकेशन एफ 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 एफ, क्योंकि उसने मेंशन किया है ना, अगर तुम्हें डेटा मिला ही नहीं, ये डेटा इज नॉट फाउंड, कैन स्टोर एफ एफ एन इन दी HL पेयर। देखिए जब हमारा फॉर लूप खत्म हो जाएगा, इसका मतलब क्या, हमने पूरा चेक कर लिया, हमें मिला ही नहीं डेटा। अगर मिला रहता तो हम डायरेक्टली बाहर आ जाते कोड के, लेकिन अगर हमें मिला ही नहीं तो हम कोड के बाहर डायरेक्ट नहीं आ पाएंगे। क्योंकि मैंने इधर मैं यहाँ लिखा हूँ ना एग्जिट, लेकिन जब हमें डेटा मिलेगा ही नहीं तो हम इस ये इफ के अंदर आएंगे ही नहीं, जब इफ के अंदर आएंगे ही नहीं तो एग्जिट होंगे ही नहीं। तो लास्ट में इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, एफ 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 एफ। ठीक है, चलो हम कोड समझने का ट्राई करते हैं। सो सी एट स्टार्ट व्हाट वी हैव टू राइट, सेम वी हैव टू पॉइंट हियर, सो LXI H 307F and then we are moving m equal to c, so this is act as a counter and अपने c में क्या आ जाएगा 6। दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, नाउ देखिए हम क्या करते हैं, अभी हम क्या करते हैं, MVI A में हम क्या ले लेते हैं, AB, दिस इज लाइक आवर डेटा, डेटा इक्वल टू AB, समझे सबको, दिस इज एनालॉगस टू दिस। ओके, दिस इज सेम एज दिस, this is same as this and this is same as this। okay, now देखिए हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पॉइंट कर रहे थे, now we have to point here now, so what we will write, increment H, now we will point here, we will point here। okay, now देखिए हम क्या करेंगे, now we will do compare what m, ये compare m मैंने आपको लेक्चर में बताया था, कंपेयर एम होता क्या है, हम एक बार फिर देख लेते हैं कंपेयर एम के बारे में। देखिए दिस इंस्ट्रक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ऑलवेज कम इन एग्जाम फॉर एक्सप्लेन कंपेयर इंस्ट्रक्शन। देखिए आई राइट कंपेयर एम मींस व्हाट, दिस इंस्ट्रक्शन this instruction will compare data of A with data of M। okay, now so there will be a तीन केस पॉसिबल है इसमें। देखिए अगर A बड़ा है M से तो कैरी फ्लैग will be 0। now what is the logic, I will also let you know। see देखिए ये कंपेयर करता क्या, वन मोर थिंग, कंपेयर व्हाट विल डू, ही विल जस्ट डू A minus M। देखिए अगर मान लीजिए मेरा A बड़ा है, इफ माई A इज ग्रेटर देन M, तो मुझे बोरो की जरूरत है क्या, बोरो की, हम बोरो कब लेते हैं, जब हमारा A छोटा होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं 2 नंबर को माइनस कर रहा हूँ, अगर मेरा पहला नंबर छोटा है सेकंड नंबर से, then there is a requirement of a borrow, but if a first number is greater than second number, then there is no requirement of borrow na, so borrow, if there is no requirement of borrow, then this carry flag will be 0। here we can write for our understanding, no requirement of borrow, no requirement of borrow। why, because A is greater than M na, therefore now यहाँ देखिए, now second case is what, if A is equal to M, if A is equal to M, this means what, देखिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, अगर A is equal to M, then our answer will be 0, so 0 flag will become 1। why logic is what, because our answer will become 0, our answer will become 0, समझे, क्योंकि देखिए A minus M ना, so A minus become A only, why, because A is equal to M। I hope this is clear to everyone। now last case is what, if A is less than M, if A is less than 1, then carry flag will be what, 1, because why, because there is a requirement of borrow। I hope this, everyone please make a note of this, सभी ये नोट कर लीजिए जल्दी। तो सब कुछ समझा ये चीज कंपेयर, इसमें कुछ डाउट है किसी को?
सभी को कंपेयर समझा? इंस्ट्रक्शन, कंपेयर इंस्ट्रक्शन, कुछ डाउट है तो लेट मी नो. Okay, please everyone make a note of it. ओके, चलो हम वापस कोड में आ जाते हैं. लेट्स कम टू कोड ओनली. ठीक है, सो वेयर वी आर, सो वी आर हियर. तो हमने फर्स्ट लाइन क्या लिखा? 07F if transfer count like a block length to a register C. Okay, then this is like same as our data only. Now we have incremental position. Now we are here. Now what we are written compare M, compare M, and now we will written here jump 0, jump 0. अच्छा, मुझे बताइए jump 0 कब होगा? See, when this condition will true, this condition will be true only when the data is AB, because in your A there is AB, and if this data is AB, then M is equal to A, then your jump 0 flag will be set, right? सबको समझा कंडीशन में क्या कह रहा हूँ? Yes. सर रिपीट करो. अच्छा, रिपीट करूँ. यहाँ देखिए, ये जीरो फ्लैग सेट कब होगा? जीरो फ्लैग सेट कब होगा? See, I have written here ना, zero flag will be when zero flag will be set when A is equal to M. अच्छा, जब हमारा A में क्या AB है, अगर हमें M में AB मिल गया तो हमारा जीरो फ्लैग सेट होगा. एंड हमारा क्वेश्चन क्या है? यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट ऑकरेंस ना. तो अगर M में AB है तो हमें फर्स्ट ऑकरेंस मिल गया, तो देखिए, इफ जीरो फ्लैग इज सेट देन वी आर जंपिंग. Where we are jumping, we are directly jumping to stop. हम डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे. जब हमें डेटा मिल गया ना तो वी विल डायरेक्टली कम आउट. लेकिन देखिए, मान लीजिए कंडीशन फॉल्स हो गया. एक कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स. देखिए ये दोनों केस में, ये दोनों केस में ना जीरो फ्लैग विल बी नॉट सेट. See, in both these conditions, zero flag will be what? 0. Here also zero flag will be what? 0 only. And here carry flag be 0. ओके, देखिए बाकी देखिए दोनों कंडीशन में जीरो फ्लैग 0 रहेंगे. खाली एक ही कंडीशन में जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा? 1. तो व्हेन जीरो फ्लैग विल, जब हमारा जीरो फ्लैग कब सेट नहीं होगा? जब हमें एक सेम नंबर नहीं मिलेगा. आइदर दैट नंबर विल बी ग्रेटर देन AB और लेस देन AB. वो हमारा इशू नहीं है. हमारा इशू क्या, हमें वो नंबर सेम नहीं है AB से, तभी हमारा जीरो. देखिए दोनों केस में आइदर नंबर बड़ा रहने दो या नंबर छोटा रहने दो, दोनों केस में जीरो फ्लैग क्या, हमारा 0 ही है. लेकिन इक्वल केस में जीरो फ्लैग 1 है. ठीक है, अगर इक्वल है तो जीरो फ्लैग 1 हो जाएगा. तो जंप 0, यस राइट, डायरेक्टली जंप हियर. अगर नहीं है, अगर नहीं है तो व्हाट वी आर डूइंग इज व्हाट. सो सिंपली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट डिक्रीमेंटिंग C, jump not 0. If C is not 0, then we are just jumping here. Okay, this is a for loop. And at last, जब ये हमारा for loop खत्म हो जाएगा, we will write LXI H F F F F. Why have we written here? Because in question they have mentioned if data is not found, store
FFF in HL where therefore see अगर डेटा फाउंड हो जाएगा, अगर मान लीजिए डेटा फाउंड होगा तो जंप कैरी फ्लैग सेट हो, तो जीरो फ्लैग सेट होगा, जीरो फ्लैग सेट होगा तो हम डायरेक्टली बाहर जंप कर रहे, हम डायरेक्टली बाहर जंप कर रहे। लेकिन मान लीजिए अगर तुम्हारा ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं हुआ, तुम्हारा जंप जीरो कभी सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसका मतलब हमें एवी मिला ही नहीं, हमें हमारे डेटा में एवी मिलेगा ही नहीं। जब मिलेगा नहीं तो वी हैव टू स्टोर FFF इन HL पेयर। ये सबको समझा? सभी को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? समझा। अच्छा ओके फाइन। देखिए क्वेश्चन में कैसा आएगा, दिस इज द वन टाइप ऑफ क्वेश्चन which might come in your exam, and this second question is what the same, the logic is same, entirely same. The only thing vary is what, the only thing vary will be what, they will they will say you वो नोट करना था, कुछ डाउट है किसी को? किसका भी वो माइक? लिखना था, वो स्क्रीन पीछे की ना, वो लिखना है। अच्छा 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 ओके फाइन फाइन, लिख लीजिए लिख लीजिए। चाहिए वाला? सर वो कोडिंग कोडिंग अच्छा ओके ओके लिख लीजिए। डन सर। ओके फाइन। सी देखिए अभी सेम क्वेश्चन ही आएगा, the question will be same, the only thing vary is what, they will say you what, see ये इसमें हमने क्या किया, ये क्वेश्चन में हमने क्या किया कि we have find the first occurrence। जैसे हमें फर्स्ट ऑकरेंस मिल रहा था, तेजस पूरा क्वेश्चन आप बता पाओगे मुझे मुझे if write binary search in ALP then it will be similar to this binary search। देखिए तेजस हम बाइनरी सर्च कब कर पाएंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म बाइनरी सर्च, इट विल बी अ लीनियर सर्च। what you are saying, it must be a linear search। हाँ देखिए the code will exactly same if they will ask you to do a linear search। देखिए हम सर्च ही कर रहे हैं ना यहाँ पर, हम यहाँ Yes. पर तो सर्च ही किए ना। हाँ बट बाइनरी सर्च मीन्स व्हाट तेजस की, if for binary search your data must be sorted and you have to jump the locations, that will be quite difficult। I think so the instead of binary search the question must be a linear search। Yes, sir. ओके हाँ लीनियर सर्च सेम क्वेश्चन ना, हमने तो सेम ही किया ना, हम तो सर्च ही तो कर रहे हैं। ठीक है द कोड विल एग्जैक्टली सेम, नॉट अ डिफरेंस। अच्छा देखिए इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट ऑकरेंस अगर हमें एक बार मिल जा रहा है तो वी आर स्टॉपिंग, जब हम डायरेक्ट बाहर आ जा रहे हैं। ठीक है लेकिन नाउ वन मोर क्वेश्चन विल व्हाट क्वेश्चन विल कम कि okay see I will just write a question for you, write a program to find how many times data ADH, see H stands for hexadecimal, okay, this is a unit, like we write now 10 centimeter, the same this how we write, this is a hexadecimal, okay, hexadecimal representation, so we will write ADH, H is a unit, okay, write a program to find how many times data ADH appears in a memory block starting from 3030 and the length of block stored in। अच्छा आप में से कोई आरजे कॉलेज में है? Anyone from RJ college which is in Ghatkopar?
कोई नहीं आने चाहिए कॉलेज से. Okay, fine. See here, the question क्या कहना चाहता है? You have to write a program to find how many times data ADH appear in the memory pair, starting from C030, and the length of block is stored in the location C02F. Store the count in D00H. Okay, this is the question. Now let's see. Let's make a diagram and first understanding C programming, then let's understanding our ALP programming. ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो? Sorry. See here, your length is been stored. Let's the length to be 7, okay? And here your data is been stored. We have taken random data. Let's to be 80, AD, 37, AD, 48, 36. How many do 4, 6, and that to be 0. Okay. Now see, in C programming, what we will write first, we will take data equal to AD. Then we will take a count. Count initially we will get as 0. Okay. We will take n equal to 7. This is like a counter. So what we will write? For I equal to 1, I less than equal to 7, I plus plus. Okay. If A of I is equal to data, then हम क्या करेंगे? इंक्रीमेंट डी इंक्रीमेंट काउंट ना, तो हम क्या करेंगे? इंक्रीमेंट काउंट. तो व्हाट वी विल डू? काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, और यू कैन राइट काउंट प्लस प्लस. सबको ये समझा? आई होप this is clear to everyone at least C program. Now same thing we have to write where? Now same, the entire logic we have to write in 8085 programming. I hope this is सबको ये समझा? सी प्रोग्रामिंग, इसमें किसी का डाउट है? No, sir. नहीं. Okay, fine. Now see, same you have to write in 8085. The entire logic will be same. So in question now they have mentioned one more thing which we just ignored. You have to store the count in this location, okay? So this location might be somewhere else. This is not a continuous location. This is D00, but our number is stored at C0, okay? So we have taken, I think 7, and you can just take any random data. See here. Now same again, the entire thing same. If you just know this C programming, the entire thing you have to do same. देखिए यहाँ देखिए. So what we will do? We are just storing A में अपना AD. This is same as data में AD स्टोर करना, जैसा हमने इसमें किया था. किसमें किया था? इसमें. ये देखिए. चलो फर्स्ट लाइन अपना हो गया. We are done with first line. Then second line what we are doing? Second line what we are doing? Count में हम 0 स्टोर कर रहे हैं. Count में हम क्या स्टोर कर रहे हैं? 0. तो let's take MVI. MVI B equal to 0 0. This is like our what? Count equal to 0. चलो ये स्टेटमेंट भी हमारा हो गया. Now what we are storing? N में equal to 7. This is like a counter ना. This is like a counter. So what we are storing? MVI C में 7. Why 7? Because it's given na, we have taken 7. This is a counter.
जो ये यहाँ पर रहेगा हमें वो लेना है, ठीक है। दिस इज लाइक n इक्वल टू 7। चलो पीछे चलो, दिस इज वी आर डन। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द फॉर लूप कंसेप्ट, वी हैव टू स्टार्ट विद द फॉर लूप कंसेप्ट हियर। तो हम क्या करेंगे, LXI H3030, so we will point here. Okay, now same again, compare m, compare m, you have to write compare m. See here, jump not 0, what we are writing, so we are writing jump not 0, मतलब हम कब जंप करेंगे जब 0 नहीं है, हम जंप कब करेंगे जब 0 नहीं है, where we are jumping we don't know, let's write 1। देखिए अगर 0 नहीं है मीन्स व्हाट, हमें वो नंबर मिला नहीं, हमें वो नंबर मिला नहीं, ठीक है। वी विल जंप व्हेन इट्स नॉट 0 मीन्स द नंबर इज नॉट सेम। See, when it will 0, then we will find that number na. So then what we have to do, we have to increment b na. So in that scenario, what we will write, increment b. See here, देखिए यहाँ 10 है and our number is what, AD. AD is equal to 10 is what, नहीं ना. So our zero flag will not set. So our zero flag will be not set. Yeah, what they are saying, jump not 0. Yes, definitely we will jump here. Okay, but assume this scenario. But assume ये केस assume कीजिए ये वाला। अभी ये केस में क्या होगा, हमारा डेटा भी एडी है, सॉरी दिस इज एडी है, अज्यूम दिस इज एडी। देखिए हमारा डेटा भी एडी है एंड हमारा ए में भी एडी है, तो हमारा कंपेयर फ्लैग क्या देगा, कंपेयर फ्लैग, आवर कंपेयर फ्लैग विल मेक 0 इक्वल टू 1। सो आवर कंडीशन इज व्हाट, जंप नॉट 0। लेकिन ये केस हमारा क्या हो गया, जंप 0, तो हमारा सॉरी ये केस में हमारा 0 फ्लैग सेट हो गया ना, तो हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया, तो हम क्या आएंगे, नीचे आ जाएंगे। And we will execute this instruction, increment b, we will increment b। okay, so हमारा b क्या हो जाएगा, 1। देखिए हमें एक डेटा मिल गया ना, हमारा b इंक्रीमेंट 1 हो गया, मतलब कि हमें एक डेटा मिल गया। now you have to do the same thing again, increment h, decrement c, jump not 0। jump not 0 means what, we have to check everything na, where we will jump here। Then see, increment h, we will point here। okay, see initially we are pointing here, ठीक है, हम यहाँ पॉइंट कर रहे थे। देन व्हेन वी डू इंक्रीमेंट h, वी विल पॉइंट हियर। c करेंगे, c को डिक्रीमेंट करेंगे, c में 7 था हमारा, अभी c में क्या 6 हो जाएगा। देन 0 नहीं है, हम कहाँ जंप कर रहे हैं, यहाँ पर। अभी हमारा इसमें AD में m है, सो m में AD है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये कंडीशन फॉल्स होगा, इंक्रीमेंट b करेंगे, इंक्रीमेंट h करेंगे, डिक्रीमेंट b, ये घूमते जाएगा। जब c 0 हो जाएगा, जब c 0 हो जाएगा, दिस कंडीशन विल बी false। But now here one thing to note is what they have asked to store the output here। So what we will do, we will first move our data into where, our data into, we will first move our data into A। देखिए B में हमारा काउंट स्टोर है, तो फर्स्ट हम उसको A में मूव करेंगे। देन वी विल राइट STA D000H, क्योंकि हमें यहाँ पर स्टोर करना है। तो A में क्या आ जाएगा, देखिए B से A में आएगा, B देखिए हमारा काउंट कितना है, ईयर एंड ईयर। सो B से A में 2 आ जाएगा और A से इसमें 2 आ जाएगा, सो देयर 2 विल बी स्टोर्ड। सो हियर वी हैव 1 एंड हियर वी हैव 1। इसको डाउट है इसमें? सर स्टार्टिंग से एक बार फिर से बताओ। अच्छा स्टार्टिंग से बताऊं वापस, ठीक है करते हैं वापस। यहाँ देखिए, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने MVI A में AD मूव किया, ठीक है। B में हमने 0 मूव किया, जस्ट लाइक अ काउंट, एंड C में हमने 7 मूव किया। दिस इज सेम एज दिस, ओके, दिस इज सेम एज दिस। अच्छा अभी देखिए हम, अच्छा लेट मी रन।
जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, यहाँ देखिए। अच्छा देखिए, अभी हम कहाँ पॉइंट कर रहे थे, जस्ट देखिए हम अभी यहाँ पॉइंट कर रहे हैं। So we have written, अच्छा मैं see we have written here, we are pointing here, okay, we are pointing here because we have written LXI C030. Then what we have written, compare and we have written compare and। देखिए हमारा A में क्या है, A में we have in A we have AD and in M we have 10, okay, see here in A we have AD and in M we have 10। तो अपना जीरो फ्लैग सेट नहीं होगा when we do compare, since the both data are not same, then zero flag will be what, zero only, okay। हमने कंडीशन क्या लिखा है, जंप नॉट जीरो, जंप नॉट जीरो, जंप नॉट जीरो, तो डेफिनेटली वी विल जंप, बिकॉज़ अपना जीरो फ्लैग वन नहीं है ना, जीरो फ्लैग वन नहीं रहता अपन जंप नहीं करते, लेकिन जीरो फ्लैग नॉट जीरो, तो डेफिनेटली वी विल जंप। अच्छा आप ना इसको ऐसा मत समझो जंप नॉट जीरो, अरे सर तो कह रहे जेड तो जीरो है तो हम क्यों जंप कर रहे। जंप नॉट जीरो मतलब क्या, इस स्टेटमेंट का मतलब समझ लो। जंप नॉट जीरो मीन्स व्हाट, we will not jump, sorry, jump not zero means what, we will jump when your zero flag is zero। देखिए जीरो फ्लैग का वन कब होगा, जब डेटा हमारा जीरो होगा। देखिए इसको अपना डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, जंप नॉट जीरो, इसका मतलब क्या हुआ ये स्टेटमेंट का, यू हैव टू जंप व्हेन योर जीरो फ्लैग इज जीरो, समझे, यू हैव टू जंप व्हेन योर जीरो फ्लैग इज जीरो। अच्छा इसको ये स्टेटमेंट समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, यस सर। ओके ये स्टेटमेंट समझ लो पहला, ओके। देखिए तो ये केस में हमारा क्या होगा, जीरो फ्लैग जीरो होगा, तो वी हैव रिटर्न जंप नॉट जीरो, डेफिनेटली वी विल जंप बिकॉज अपना जीरो फ्लैग क्या जीरो है, तो हमने यहाँ जंप किया। देन वी हैव इंक्रीमेंट h, नाउ आर वी विल पॉइंट हियर, वी हैव डिक्रीमेंट c, हमारा c 7 था ना, अभी c क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ओके। c 0 है क्या, c 0 है क्या, जंप नॉट जीरो, c 0 है क्या, नहीं ना, तो हम कहाँ पॉइंट करेंगे, यहाँ पर L2 में, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे, देखिए अभी हमारा a में AD है, अभी लेकिन m में क्या है मेरा AD। अच्छा अभी जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों डेटा सेम है, दोनों डेटा सेम है, दोनों डेटा सेम है। तो देखिए ये कंडीशन क्या लिखा है, जंप नॉट जीरो, ये लेकिन देखिए हमारा जीरो फ्लैग क्या 1 हो गया ना, हमारा जीरो फ्लैग क्या हो गया 1, तो हम जंप करेंगे क्या, नहीं करेंगे, हम इधर आएंगे, हम इधर आएंगे, नाउ वी विल इंक्रीमेंट, बी हमारा इनिशियली जीरो था, अभी बी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। देन वी विल इंक्रीमेंट h, वी हैव इंक्रीमेंट h, decrement c, और now c will become 5, jump not 0, c 0 है क्या, नहीं ना, वापस यहाँ चेक करेंगे, ठीक है। अभी देखिए अभी हमारा m में क्या है, now in m we have 20, अपना a में है, देखो a और m का वैल्यू सेम है क्या, नहीं ना, तो जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा आपका जीरो, इफ रिटर्न जंप नॉट जीरो, या भाई देखिए। अच्छा इस स्टेटमेंट का मतलब मैं लिख लेता हूँ, तो जंप नॉट जीरो मीन्स व्हाट, जंप if carry flag is what, not set, not set means what, if carry flag is not 1, not set means what, not 1, जब if carry flag is not 1, देखिए कैरी फ्लैग तो जीरो है, तो हम क्या करेंगे, जंप करेंगे, कहाँ जंप करेंगे, यहाँ पर, अगेन वी विल इंक्रीमेंट h, डिक्रीमेंट c कितना हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। इस जंप नॉट जीरो, ये जीरो है क्या, नहीं ना, तो हम कहाँ जंप करेंगे, कंपेयर m में वापस। अच्छा अभी देखिए यहाँ पर 30 है, अच्छा m में क्या आ जाएगा 30, m में क्या आ गया हमारा 30, और a में तो AD है ना, तो वापस मेरा जीरो फ्लैग क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, तो मैंने क्या लिखा हूँ, जंप नॉट जीरो। अच्छा जीरो फ्लैग में मेरा 1 है क्या, नहीं ना, तो मैं जंप करूंगा, तो कहाँ जंप करूंगा, यहाँ पर वापस मैंने इंक्रीमेंट क्या करूंगा m, now m is pointing here, डिक्रीमेंट c, हमारा c become 3, ये जीरो है क्या, c नहीं ना, तो यहाँ पर जहाँ पर जंप करूंगा, नाउ अभी m में क्या है मेरा, m में नाउ सी इन माय m, नाउ इन माय m इट्स AD, ओके। नाउ देखो a में क्या है AD, m में AD, मेरा जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा 1,
मैंने क्या लिखा हूँ, जंप नॉट जीरो मींस व्हाट, जंप इफ कैरी फ्लैग इज नॉट सेट। लेकिन इसमें कैरी फ्लैग सेट हो गया ना, मेरा जीरो फ्लैग 1 हो गया ना, तो मैं जंप नहीं करूंगा, मैं अंदर आऊंगा, बी को इंक्रीमेंट करूंगा, तो मेरा बी क्या हो जाएगा 2। इंक्रीमेंट एच करूंगा, यहाँ आपस पॉइंट करूंगा, ठीक है। डिक्रीमेंट सी करूंगा, सी कितना था मेरा, सी कितना था 3 था ना, तो सी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सी मेरा कितना हो जाएगा 2। सी 0 है क्या, नहीं ना, तो वापस एन जंप करूंगा, कंपेयर एम कंपेयर एम कंपेयर एम। अच्छा देखिए एम में क्या आ गया, एम में मेरा क्या आ गया 40 आ गया, एम में क्या आ गया 40, एम में क्या आ गया 40, एम में 40 आ गया। और ए में क्या है मेरा, ए में तो एडी है ना, तो दोनों सेम ही है, जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा 0। तो भाई जीरो फ्लैग जंप इफ कैरी फ्लैग इज नॉट सेट, सॉरी, हाँ भाई बस सेट नहीं है, तो मैं जंप करूंगा, मैं इधर आऊंगा, इंक्रीमेंट एच करूंगा, इस फिर डिक्रीमेंट सी करूंगा, इंक्रीमेंट क्या करूंगा सी, दिस विल बिकम 1। अभी ये 0 है क्या, 0 है क्या, नहीं है, अगेन आई विल जंप हियर, ओके कंपेयर एम करूंगा, तो अभी मेरा एम में क्या आ गया, एम में सी, एम में मेरा आ गया 50, एम में 50 है, और ए में क्या है मेरा एडी, आपस जीरो फ्लैग तो जीरो रहेगा ना, दोनों सेम नहीं है, जीरो फ्लैग विल बी जीरो, so जीरो फ्लैग नॉट सेट, अगेन आई विल जंप हियर, अगेन आई विल जंप हियर, नाउ आई विल पॉइंट हियर, आई विल पॉइंट हियर, डिक्रीमेंट सी, सी क्या हो जाएगा 0, मैंने क्या लिखा है जंप नॉट जीरो, लेकिन तो 0 हो गया ना, तो 0 का मैं क्या करूंगा, जंप नहीं करूंगा, जंप नहीं करूंगा, इसका फिर मैं ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगा। देखो मैंने बी को फिर किसमें मूव किया, ए में, तो ए में क्या आ गया मेरा 2, एंड एस टी ए में डी 0 में ये स्टोर कर रहा हूँ। देखिए ये डेटा में एडी कितने बार अपीयर हुआ है, 1 टाइम 2 टाइम, काउंट मस्ट बी 2 ना, सो सिंस सी हियर वी आर गेटिंग काउंट एज 2 ओनली। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Still, if you have any doubt, let me know. किसी को डाउट है अभी भी, मैं समझा नहीं कोड। सर कॉलेज में जो सीएमपी की जगह सीपीआई दिया है, कॉलेज में, हाँ उधर सीएमपी की जगह ना सीपीआई दिया है। कॉलेज में सीएमपी के बदले में सीपीआई दिया है। अच्छा देखिए, तो फिर उन्होंने क्या कह दिया ना, यहाँ देखिए, अच्छा ये डाउट किसका है, टीचर्स आपका डाउट है कि किसका डाउट है, शुभम। सॉरी शुभम। शुभम। अच्छा यहाँ देखिए, सी तो उन्होंने क्या कह रही है ना कॉलेज में, उन्होंने देखिए ये लाइन देखिए, सी सी वी आर राइटिंग द लॉजिक, सी यू कैन डू इन एनी, लाइक हम ना कैसे भी लिख पाएंगे। देखिए वो क्या कर रहे हैं ना शुभम, दे आर यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन, सी नाउ दे विल डायरेक्टली राइट, दे आर डायरेक्टली राइटिंग इन दिस वे, कंपेयर सीपीआई विद डेटा, सीपीआई विद डेटा, ठीक है। लेकिन देखिए हमने क्या किया है, हमने ये जो एक को है ना, हमने एडी में मूव किया है। See, if you won't write, if you don't want to write this statement, छोटा कर देता हूँ आपको, देखिएगा, देखिए अगर ये स्टेटमेंट आपको नहीं लिखना है, इस स्टेटमेंट दिस स्टेटमेंट अगर आपको ये नहीं लिखना है ना, if you won't write this statement, then instead of this what you should write, API data, यस सर, समझा। समझे। देखिए हमने डेटा को मूव कर दिया ना ये में, इसके लिए हमने ऐसा लिखा है। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। देखिए लॉजिक इज एट लास्ट, योर लॉजिक मस्ट बी राइट। देखिए आप कोड कैसा भी लिखिए, अगर आपका लॉजिक राइट है एंड इफ यू पुट द प्रॉपर हेक्स कोड इन दैट मशीन, देन यू विल गेट द आंसर। अच्छा आप सबको कॉलेज में मशीन में करा, लाइक यू आर डूइंग इन द किट, यस सिमुलेटर किट में माइक्रोसॉफ्ट। यस। तो देखो वही, अगर आपका लॉजिक राइट है, इफ यू पुट द प्रॉपर, देन डेफिनेटली विल गेट द आंसर। यस ओके फाइन, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। किसी को डाउट है भी इसमें, ये क्वेश्चन में किसी को भी? सबको समझा? Yes. Okay, fine. So see, we are done with the block. So first we have done with, I think so, even odd number concept. Then we are done with the first occurrence. Then now we have done with the like count of a data. What count of a data? Now let's move ahead. Now we have to do the transfer of data from one location to the another locations.
Okay, can transfer of the data from one location to the another locations. See here, the question might be in this way. See, a block of data is stored in memory location from C060 H to C060A. Another block of data having the same length is stored in memory location from C001. Write a program to exchange the content of these two blocks. अच्छा, everyone just try at least once. अच्छा, at least एक काम कीजिए. First of all, you just draw a diagram and try to write the code in the C programming. Okay, I will give you 5 minutes. Just try by yourself, or at least I will give you 3 minutes. Within 3 minutes, I think you can do it. Just draw the diagram which we used to draw in every questions and try to implement in C programming. Okay, everyone, please try it.
आई होप किसी ने ट्राई किया होगा। यस सर, हो गया सर। ओके फाइन, ठीक। यहाँ देखिए, लेट्स ड्रॉ ये डायग्राम फर्स्ट। देखिए वो क्या कहना चाहते हैं क्वेश्चन में, ये लोकेशन है, ये एक लोकेशन, and one more location is there। अच्छा ये बहुत लाइट कलर है तो दिख नहीं रहेगा आपको, let's take a dark color, blue। And they given this location as C100। ठीक है, यहाँ भी 11 नंबर है, यहाँ भी, यहाँ कितना नंबर है, 2 4 6 8 10 11। यहाँ देखिए 2 4 6 8 10 11, दोनों जगह 11 11 पोजीशन है। देखिए यहाँ मान लीजिए कोई रैंडम नंबर से यहाँ पर स्टोर है एनी नंबर, या 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 and 110। Now we have to transfer all this data from here to where, here। Okay, now first of all write a code in C programming। हम एक C programming में कोड लिखते हैं, ठीक है, just a second। देखिए हम C programming में कोड कैसा लिखेंगे, पहला से लेट्स हम यहाँ पर I को पॉइंट करते हैं और यहाँ पर J को पॉइंट करते हैं, ठीक है, इसको एरे A मान लेते हैं, इसको एरे B मान लेते हैं। दिस इज एरे A एंड दिस इज एरे B। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कितना नंबर है, 11 ना, तो लेट्स स्टोर n इक्वल टू 11, सेम एज काउंट। हम क्या लिखेंगे, फॉर, अच्छा, एंड बिफोर दिस व्हाट वी हैव टू डू, हमें I को 1 करना पड़ेगा एंड J को भी 1 करना पड़ेगा, ठीक है, I 1 एंड J 1 ना। नाउ फॉर व्हाट वी विल राइट, फॉर I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू 11, I प्लस प्लस, और अब क्या करेंगे, जस्ट B ऑफ J को A ऑफ I में डालेंगे ना, यहाँ से इधर सेम, यहाँ से इधर, एंड J का करेंगे प्लस प्लस, I तो इधर प्लस प्लस हो ही जा रहा है ना अपने आप, एंड जस्ट वी विल इंक्रीमेंट J प्लस प्लस। दिस इज द कोड इन C प्रोग्रामिंग। नाउ सेम कोड, कुछ है नहीं, बाकी एग्जैक्टली सेम कोड वी हैव टू राइट इन नाउ आवर 8085 लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सबको समझा सी प्रोग्रामिंग का कोड, आई होप सभी को सी प्रोग्रामिंग समझा रहेगा। अच्छा, इसमें किसी को मुझे लग रहा है डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स राइट दिस सेम थिंग इन आर 8085। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया, हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट वी हैव स्टोर द काउंट ना, जस्ट अ सेकंड यार, जस्ट अ सेकंड, ये बिगड़ गया, जस्ट अ सेकंड।
2 मिनट लेट्स डू, ठीक है। यहाँ देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया इधर, वी हैव डन हियर, वी हैव डन n इक्वल टू 11 ना, तो सेम थिंग हियर आल्सो वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट mvi c equal to 0b, which means what, n equal to 11 only. 0b अपने लैंग्वेज में क्या होता है, 11 होता है, ठीक है। देन व्हाट वी हैव डन हियर, वी हैव इक्वल i इक्वल टू 1, मतलब हम यहाँ i को पॉइंट किए, j को हमने यहाँ पॉइंट किया, तो सेम हम यहाँ, हम इधर क्या करेंगे, हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पॉइंट में LXI h इक्वल टू 3060, इसका मतलब क्या है अपना i इक्वल टू 1 एंड LXI d को हम क्या करेंगे, और लोकेशन क्या था, आई थिंक सो लोकेशन इज आई थिंक सो समथिंग दिस, ओके। ये क्या है, j इक्वल टू 1, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पर पॉइंट किया हमने i को, यहाँ पर पॉइंट किया हमने j को, तो सेम हम क्या कर रहे हैं, हमारे लैंग्वेज में h को इधर पॉइंट कर रहे हैं, we are pointing HL here and we are pointing let me change the color, same दिख रहा है ना, चलो ब्लैक ले लीजिए, we are pointing HL here and we are pointing DE here, DE, we are pointing DE here, ठीक है। अच्छा, अभी क्या करेंगे, हमने पॉइंट कर लिया, हमने क्या कर दिया, पॉइंट तो कर लिया, अभी हम क्या करेंगे, ट्रांसफर, हम क्या करेंगे अभी, ट्रांसफर, देखिए हमें ट्रांसफर करना है ना अभी, तो देखिए ट्रांसफर करने के लिए हम क्या लॉजिक यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग टू ट्रांसफर, व्हाट लॉजिक वी आर यूजिंग इज व्हाट, हम क्या लॉजिक यूज करेंगे ट्रांसफर करने के लिए, तो सोचो, सब लोग सोचो, फॉर ट्रांसफर व्हाट लॉजिक वी शुड यूज। देखिए हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट दिस लोकेशन, ये जो नंबर है ना, ये नंबर where we will store, see this number we will store in accumulator, okay, see this number we will store in accumulator, we should store this number into accumulator and from accumulator we'll store here, समझे, or else we can directly move here, we can directly move here, हाँ नहीं तेजस देखिए, आपका लॉजिक राइट है, लेकिन तेजस फॉर HTAX वी हैव रिटन मेमोरी लोकेशन ना, लेकिन देखिए दिस इज द ब्लॉक ऑफ मेमोरी लोकेशंस, सो द कोड विल बी वेरी वेरी लॉन्ग, क्योंकि देखिए हर लोकेशन के लिए, फॉर एवरी लोकेशन वी हैव टू राइट द मेमोरी लोकेशन, समझ रहे आप जो कह रहे हो ना, सी द ओनली इशू इन दिस इज व्हाट, कि आपको ना ऐसा लिखना पड़ेगा सभी के लिए, सी आप जो कह रहे हो, for every question you have to write it this way, you have written move a comma b, then you have to write sta x d0, sorry c010, now again you have to write move a comma m, and again you have to write sta x c101, तो जितने भी लोकेशन आपको वैसा लिखना पड़ेगा, तो दिस लॉजिक इज नॉट राइट, नहीं सी you can yeah, you can write HTAX. This is second. Right, Shubham, you are right. You are right. Here you have to here we can use LDAX and HTAX. Yeah, absolutely right. हम इसमें शुभम, यस सर, हाँ लिख पाएंगे तेजस, अभी हम लिख पाएंगे, राइट है आपका, अभी आपका राइट हुआ, now here we can write HTAX, see here we can write what, LDAX and we can write HTAX, okay, यहाँ देखिए logic is very simple, बस खत्म, यहाँ देखिए, so what we will do, first of all we have to load ना, we have to load LDAX in H, तो जो भी HL में वैल्यू रहेगा वो कहाँ पर आ जाएगा, A में, तो अपना पहला नंबर, ये जो नंबर है वो किस में आ जाएगा, A में आ जाएगा 10, then what we are doing STA XD, तो जो भी A में वैल्यू रहेगा वो किस में आ जाएगा, DE में, मतलब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो नंबर है हम A में डालें and then we are storing this number here, मींस here, ठीक है, देखिए हमने ये लॉजिक किया, फर्स्ट वी आर लोडिंग हियर इनटू A and from here we are loading into DIM, then what you have to do, just increment H,
increment D and decrement C. Jump not 0. Where here. The code is over. समझा सभी को? ये कितना इजी कोड है? यस सर, समझा। यस सर, समझा। ओके फाइन। बाकी सबको समझा? किसी को डाउट है बाकी सब में? है बाकी कोई तो रेस्पॉन्स करता ही नहीं है, सब ऐसे बैठे रहते हैं। आई थिंक देयर आर 18 स्टूडेंट ज्वाइन। या बाकी सब या तो स्कॉलर टॉप सब टॉपर है, या तो यार बाकी कभी किसी को डाउट ही नहीं आता है, एक्सेप्ट 2-3 स्टूडेंट। बाकी सब मुझे लगता है सब टॉपर्स ही हैं। Yeah, I hope this is clear to everyone. Now let's move ahead. Now see, now one more question will be like what? Just opposite of this. Just इसका उल्टा question. Now the question will be right. The question will be like a block. See, in exam this might come. This also, see, this is very easy. ये question देखने में बहुत बड़ा लगता है हमें. See, if we read the question, हमें लगता है अरे भाई बहुत बड़ा question है. But the logic is very very simple. And this chance of coming this is very high. This is easily come for 5 marks. See, if we come for 5 marks, what you have to do? See, first try to draw these diagrams. Don't write in C language, okay? इस C language मत लिख देना उसमें. Just draw diagram in this way and explain at least 1 or 2. ऐसा draw कीजिए, then अपनी ऐसा लिखिए A equal to 20. Just make an arrow here. And here just write ऐसा लिख लीजिए इसको LDAX and STX. आप इतना लिखोगे ना मैम, जो भी रहेगा चेक करने वाला समझ जाएगा, मतलब भाई बंदे या बंदी को आता है। ऐसा लिखा होगे तो यार डेफिनेटली यू विल गेट अ 5 मार्क। ठीक है, अभी देखिए, अभी क्वेश्चन क्या है? अ ब्लॉक ऑफ डेटा stored in memory location from C0 D0 to C0 DB. Write a program to transfer the data in reverse order. In which order? In the reverse order to the memory location देखिए इसका लॉजिक क्या मैं आपको बताता हूँ, बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा कुछ समझने लायक, लेकिन है तो इजी बहुत। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? वो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक अ डायग्राम। They have given is what sorry.
सभी को स्क्रीन विजिबल है? बिकॉज ऑफ योर इंटरनेट फ्लक्चुएशन जस्ट Yes, sir. okay fine, let's draw a diagram again. I think so आप सभी ने क्वेश्चन तो कॉपी किया होगा. I'm just drawing diagram again. Okay, डायग्राम वापस ड्रॉ कर लेता हूँ. This is the location is what? Can anyone let me know? Actually, so C0 D0 ना? C080. Right, C080. Kinjal will definitely do it. The nibbles, the multiplication of separate nibble. Okay, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे ना? After doing this, ना, I will just let you know the logic, and in next lecture we will definitely write a code for it. I think ये same question, I think so मुझे ये same question I think so बाकी किस like yeah definitely we will do this question. Just a second. Yeah, paste mode है, बस यही इसका issue है. हाँ, we will देखिए हम करेंगे निबल का क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन before learning all this thing we should learn something very easy. निबल is also easy, but थोड़ा moderate level का है निबल. इसके लिए फर्स्ट जो सब easy है हम ये कर लेते हैं. आज हम निबल का लॉजिक देख लेंगे. What is the logic? It's C080 ना, right? हाँ, okay. See you. अच्छा, ये आपको प्रैक्टिकल में है ना? मैं जो करा रहा हूँ कि प्रैक्टिकल में नहीं है. अगर ये नहीं है तो फिर डायरेक्ट हम निबल में चले जाते हैं. आज ही फिर ये है आपको प्रैक्टिकल में. प्लीज लेट मी नो. Yes, sir. है सर, ट्रांसफर इन रिवर्स ऑर्डर है ना? ठीक है, फिर कर लेते. चलो देखिए, लेट्स टेक एनी रैंडम नंबर. इसमें भी ना सेम लॉजिक करना है. जस्ट एक कोड का डिफरेंस है. एक लाइन ही हमें अलग लिखना है, बाकी सब सेम है यार. अच्छा, ये लोकेशन मुझे भी बता देगा, ये लोकेशन क्या था? ये अदर लोकेशन इज व्हाट? C180 C180. C180 ना. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं. यू हैव टू पॉइंट हियर. मतलब आपको ना सब उल्टा ट्रांसफर करना है. आपको कैसा करना है? उल्टा ट्रांसफर. चलो कॉपी कर ही लेते फटाफट. So you have to transfer in opposite direction. Now आपको ऐसा ट्रांसफर करना है. हमने एक एक्स्ट्रा ले लिया. ठीक है. आई थिंक सो यार मैंने कोई नंबर मिस कर दिया रहेगा इसमें. 4 5 6 7 8 9 A B. यहाँ आई थिंक सो हमारा नंबर रिपीट हो गया. ये 7 7. ठीक है, आप समझ लीजिए. ओके, ध्यान देखिए हम लॉजिक क्या देगा. लॉजिक इज वेरी सिंपल. नाउ वी विल पॉइंट I हियर एंड वी विल पॉइंट J हियर. बाकी सब कुछ सेम. ये क्या करेंगे हम? n में क्या ले लेंगे? हम n में कि कितना नंबर है? 2 4 6 8 10 12 ना. 12 नंबर. n में 12 ले लेंगे. I में क्या ले लेंगे? I में लास्ट लोकेशन. I में क्या ले लेंगे? 12. और J में क्या ले लेंगे? 1. ठीक है, J में क्या ले लेंगे? फर्स्ट लोकेशन. बाकी सब कुछ तो सेम ना यार. और I इक्वल टू 12. और चलो I इक्वल अपन इसमें वाइल लूप से करते हैं. वाइल लूप से. ठीक है,
while क्या लिखेंगे अपन, while I is greater than equal to 1, ठीक है। हम क्या करेंगे, B ऑफ J में, मतलब B और A, ठीक है, B ऑफ J में A ऑफ I डालेंगे, I को अपन क्या करेंगे डिक्रीमेंट, I को क्या करेंगे डिक्रीमेंट, और J को क्या करेंगे इंक्रीमेंट, क्या करेंगे इंक्रीमेंट, बस खत्म, लॉजिक ओवर। देखिए अभी कैसे लिखेंगे इसको, सी इसमें अपने को 8085 में एवरीथिंग सेम, सब कुछ सेम। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन काउंट शो करेंगे, अपना कितना कितना 12 नंबर है ना, तो 0C, क्योंकि अपने लैंग्वेज में क्या होता है 12 मतलब 10 11 12, ठीक है, अपने लैंग्वेज में 0C। नाउ क्या करेंगे LXI H, हम काम पॉइंट करेंगे इधर नीचे, नीचे से ना, सो वी विल पॉइंट HL here, ओके, वी विल पॉइंट HL here and DE here, हम पॉइंट करेंगे HL इधर, DE इधर, DE इधर, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए, यू कैन LXI H C0 DB and LXI D C1 80, ये हमारा I इक्वल टू 12 की तरह काम कर रहा है, और ये हमारा J इक्वल टू 1 की तरह काम कर रहा है, और दिस वर्क एज N इक्वल टू 12, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, सेम LDAX H एंड STAX D, समझे। बाकी क्या करेंगे अपन, डिक्रीमेंट H, इंक्रीमेंट D, डिक्रीमेंट C, जंप नॉट 0 वेर इधर और इधर, तो समझा कोड सेम है ना, जस्ट एक लाइन का फर्क है, जस्ट ये लाइन का फर्क है। वो कोड में देखो हमने ऐसा लिखा रहेगा, बाकी एवरीथिंग इज सेम, ये लाइन का फर्क है और ये लाइन का फर्क है, बाकी देखो सब कुछ सेम रहेगा। सर यहाँ पर LDX की जगह मूव A, M भी यूज कर सकते हैं ना, मूव A, M LDX की जगह, तो M का जो A में चला जाएगा फिर हाँ, STX। यू कैन डेफिनेटली यू कैन राइट। देखिए आप, मैं वही कह रहा हूँ, देखो आप कुछ भी लॉजिक लिखो, ऐसा नहीं कि आपको जस्ट मेरा ही फॉलो करना है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, या आपको जो मैम ने लाइक लिख के दिया वही फॉलो करना है। यू कैन राइट एनीथिंग यू वांट, एट लास्ट योर आंसर शुड बी राइट, योर लॉजिक शुड बी राइट, बट क्या कीजिए, ट्राई कीजिए कि जो मैम ने आपको पढ़ाया है ना, आप वही लिखिए। क्योंकि ऐसा होता है कि ना, जब देखिए क्योंकि आपका प्रैक्टिकल ना मैम चेक करने वाली है, ठीक है, तो जो मैम ने पढ़ाया ना, मैम के माइंड में बैठा रहेगा कि मैंने ऐसा पढ़ाया हूँ, मैं ऐसा पढ़ाई हूँ, या मैं ऐसा पढ़ाया हूँ। तो जब आप वही कोड लिखोगे ना, तो कैसे कि आप मैम को तुरंत क्लिक होगा। अगर आप कुछ नया लिखोगे, मे बी इट राइट, लेकिन क्या फिर मैम को उसमें गो थ्रू करना पड़ेगा, ये राइट है कि रॉन्ग है, तो उसमें क्या होता है मैम का टाइम जाता है। 5 मार्क मिलेगा नो डाउट अगर राइट रहा तो, लेकिन टू इग्नोर ऑल दस थिंग, टू अवॉइड, क्या कीजिए जो मैम ने दिया आप वैसा ही लिखिए, ऐसा। And exam you can write in any way if you want, but in practical try to write as ma'am has given you. Oh, this is clear to everyone. So say today we are done with a block of transfer of data from first of all from one location to other location in same order. Second is what, in a reverse order. I hope this is clear to everyone. इसमें कुछ doubt है तो पूछिए मुझे first of all. I hope this is clear to everyone. Then we have done what, even odd concept again. Then इससे पहले हमने आज क्या किया, I think so, हाँ, count occurrence. First we have done the first occurrence, and then we have done the count, how many times it has been appeared in the block of data. Now see, I think so now, like few more instructions are remaining, few more codes are remaining, we will do it. Okay, now चलो आज हम क्या करते हैं, at least let's learn the logic of nibble. निबल होता है क्या, मुझे, मैं आपको वो बता देता हूँ कि हाउ वी विल फाइंड द निबल क्वेश्चन। ओके चलो, और आज हम कर लेते हैं, इट्स ओके इफ वी एक्सटेंड द लेक्चर लाइक फॉर 10 मिनट, सबको चलेगा। किंजल वेयर वी यूज ADI 0 और ADI 01। अच्छा आप निबल में कह रहे हो, अच्छा लेट्स सी ना। देखिए मुझे यार याद नहीं है, लाइक
See, we have to derive the logic. Okay, let's see the में भी ना logic. 0 0 यूज करते हैं या ADI 0 1 यूज करते हैं. हाँ, देखिए मुझे याद नहीं है. Let's me derive the logic. After deriving the logic, I can tell you. मतलब मैं याद नहीं रखा हूँ कि कैसे करना है. लाइक हम लॉजिक को डिराइव करते तो डेफिनेटली इट विल बी क्लियर टू यू. ओके, यहाँ देखिए. अच्छा, यहाँ देखिए. सी, निबल मीन्स व्हाट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अंडरस्टैंड दैट. देखिए निबल होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न सम बेसिक. ओके, लेट्स लर्न सम बेसिक. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बिट. बिट क्या होता है? आइदर 0 और 1. ओके, बाइट क्या होता है? 1 बाइट. 1 बाइट इज व्हाट? 8 बिट. 8 bit means what? ठीक है. Now nibble. Nibble means what? 4 bit. Nibble means what? 4 bit. 4 bit means what? ऐसा. So this is one nibble and this is one nibble. Okay. देखिए अभी लॉजिक देखिए कैसा. See, now let's consider we have 48. We have 48. See, 48. So this is okay. This is 48. Now see, if I do ADI 01, if I do, see, let's assume A is in 48. Okay, if I do ADI 01, then what I will get? See here, if I do ADI 01, then what I will get? This 48, this is 0, and this is 1. This statement is what? Logical and na ADI. ADI stands for ADI or ANI. Kunjan, you are sure about ADI or ANI? I think so it should be ANI, na? Yes sir, ANI दिया है. हाँ, किंजल आपको समझा ये लॉजिक में क्या पूछ रहा हूँ क्वेश्चन? Yes sir. It should be ANI, right? यहाँ देखिए यहाँ ANI आना चाहिए. मैं वही सोच रहा हूँ. Why should be ADI? See, this must be ANI. देखिए जब I will do ANI 0 तो logically and, okay, logically and with 0 1. तो देखिए जब ये करूंगा मैं, so what I will get? No. This is wrong. Sorry. See, do your logically and with 0f. Logically and with 0f. See why? Logically and with 0f. जब मैं 0f के साथ logically and करूंगा ना, so see here everything will become 1. Okay. Now when I do logically and, see ये सब 0 हो जाएगा. ये सब क्या हो जाएगा? 0. And ये क्या हो जाएगा? ये. Now this will become what? 0 0 0 1. So मुझे A में क्या मिल गया? A में in A I get 0 8. Okay, in A what I get is 0 8. देखिए मेरा एक नंबर सब्ट्रैक्ट हो गया ना. मुझे 4 अलग चाहिए था, 8 अलग चाहिए था. तो I get A में मुझे क्या मिल गया? A में in A I get 0 8. Okay, in A I get 0 8. Now what you do again? Now see there is 48 now. Now you do ANI F0. What you do? ANI F0. तो यहाँ देखिए सब, यहाँ देखिए. See, if I write 0 1 0 0, this is 4, this is 8, and this is F now. F, and this is 0. When I do logically and, now this entire thing becomes 0, and see this is 0 0 1 0. Now this become 80. This become what? This become 80. So in A I will get 80. In A I will get 80. But क्या कीजिए? But see, the logic is what? You rotate. Once you get the answer ना, आप क्या कीजिए? इसको आप 4 बार rotate कीजिए. When you rotate this 4 times, you do RRC 4 times. When you do RRC 4 times, you will get it as, आपका ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा. You will get as 0. So see here.
we get number 08 and we will get 04. Sorry sir, I'm extremely sorry. We will get 04. देखिए हमें इधर 40 आ रहा है. See here the number is what 4040. 40, But yes. what we want 04. Just rotate this 4 times, we will get 04. So see we get 04 and we get 08, then just you have to multiply. समझे ये चीज या फिर बताऊं? पर वो आरआरसी के बाद मैंने समझा क्यों किया वो. अच्छा ठीक है, रुको हम अच्छे से कर लेते हैं. ध्यान दो, जस्ट ध्यान देखिए. See the logic is what I ध्यान देखिए. देखिए a में 48 है, ठीक है. आप क्या कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसको ना एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर दीजिए. सो b में क्या हो गया, 48 आ गया b में भी, ठीक है. दिस इज जस्ट दिस एक्ट एज अ टेम्परेरी वेरिएबल, टेम्परेरी वेरिएबल, ठीक है. अभी यहाँ देखिए, अभी आप क्या कीजिए, ANI 0 आपने क्या किया, ANI 0. देखिए ये स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, a में मेरा 48 है, ठीक है. एंड मेरा अब मैं क्या कर रहा हूँ, 0F ना. This is 0 1 0 0 1 0 0 1 0. This is 1 0 0 0 0. ठीक है. तो मेरा a में क्या आ गया, a में this is 0 and 8. Now this move this into C. So see in C I get 0. Okay. Now do one thing again. Now move A to B. ठीक है. B में मेरा 48 था, मैं बस A में डाल देता हूँ. Now again A become 48. Now again A become 48. Now you what you do? You do ANI F0. What you do, ANI F0. सबको वॉइस क्लियर आ रहा है ना? Yes. Okay, fine. तो वहां से माइक चल रहा है, आई थिंक सो आपके. क्या देखिए ANI F0. सो मैं क्या कर रहा हूँ, ANI F0 में C है. A में क्या है मेरा 48 ना, अगेन सी A में 48 आ गया क्योंकि मैंने आपस में मूव किया. And 48 and F0 na, see F means what? Now see here. Now what I will get here? Now here I am getting 40. See here what I am getting here. A में क्या मिल रहा है मुझे, 40 मिल रहा है. But what actually I want 4, not 40. What I want is 04. Or what I want is 04. So you do one thing, you just rotate 4 times. now देखिए इसका मतलब क्या हुआ. See when we rotate 4 times means what? See initially we हमारे पास A में क्या है. Let's make a diagram, then it will be very easy for you to understand. देखिए हमारे यहाँ हमारे पास ये है ना. Okay. Now after performing RRC one time, so performing RRC one time, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर, and this will come. Yeah. So इधर 0 आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा. Okay. Now again perform RRC. We again perform RRC. Guys, just wait for a second. Okay. Just a second. तो देखिए जब हम अब वापस RRC करते हैं, ठीक है. Again when we perform RRC, देखिए ये 0 इधर आ जाएगा, and this all will shifted once. वापस आप RRC कीजिए. When you again do RRC, what will happen?
जब हम वापस RRC करेंगे तो क्या होगा, दिस विल कम हियर, दिस 0 विल कम हियर एंड ऑल दिस विल गेट शिफ्टेड। आप वापस RRC कीजिए 4 टाइम। क्या होगा, दिस 0 विल कम हियर एंड ऑल दिस शिफ्टेड। अभी देखिए, ठीक है, अभी देखिए, अगर हम देखेंगे this become 0 and this become 4, समझा? So after performing 4 time RRC, now in A we have 0 4 and in C we have 0, so we have subtracted 2 nibble. Why Tejas? Because why we are converting it into 0 4, because our number is what Tejas, 48 ना, so we want 0 4 and 0 8 ना। देखो Yes, यहाँ sir. से अपने को 0 8 तो मिल जा रहा है, लेकिन यार यहाँ से अपने को 40 मिल रहा है ना यार, तो 40 को अपने को 0 4 करना पड़ेगा ना, क्योंकि वी वांट 4, वी डोंट वांट 40, समझे, इसलिए हम उसको 0 4 कर रहे हैं। Yes, क्लियर sir. ना? समझा। अच्छा, बाकी सब कुछ समझा? तेजस, शुभम, किंजल, दूसरे Yes, किंजल sir. एक्टिव है? Yes. ओके फाइन। तो as of now this is the logic of the please make a note of this, everyone just please make a note of this, everyone just make a note of this, okay? Like जो देखिए इसका आगे कुछ है ही नहीं, see once you are done with this, now you have to just make a multiplication, इसके बाद आपको just कोड कॉपी करना है किसका, मल्टीप्लिकेशन का, ओके? ये हम कल में वापस देखेंगे। एज ऑफ नाउ आप इतना समझ लीजिए आज के लिए, ठीक है? इफ एनीवन हैव एनी डाउट रिगार्डिंग निबल, प्लीज लेट मी नो, or else we can just stop here for today.